Hello everyone students, how are you all? I hope you all are fine. Good. So, do you have remember what we have studied in our previous class? In our previous class only, we have studied the types of soil, means which kinds of soils, that is sandy soil, clay soil and the loamy soil. Okay, and we have studied their each soil's characteristics also, and we have seen that the loamy soil is the best soil for the growing plants. Okay, because the sandy soil and clay soil, which they have the characteristics but which are not suitable for the plant. Okay, so the loamy में क्या होता है, loamy is a mixture of both the soil, so it have the property which is suitable for the plants. Okay, so that we have studied in our previous class. So today we are going to start the next topic, that is the activity 9.3. Okay, so what is given this activity 9.3? So for this activity 9.3, we need the three kinds of soil: clay soil, loamy soil and the sandy soil. Okay, we have to take the fistful of the soil, all kind of this soil. मतलब आपको अपने को थोड़ी सी मुट्ठी भर वो soil चाहिए. Okay, and afterwards we have to remove the pebbles and rocks, then the grass blades, all things from that soil. Okay, now afterwards we have to add some water drop by drop into that, and we have afterwards we have to knead the soil. Okay, जैसे कि as shown in the figure 9.4a, मतलब हमें उस मिट्टी को क्या करना है, सॉइल को आटे की तरह गूंद लेना है. अंडरस्टूड? आफ्टरवर्ड्स what we have to do, we have to add enough water into that, so we can make a ball kind, like you can see the diagram B, जैसे उन्होंने बनाया उस टाइप का हमको बनाना है, वाटर ऐड करके. ओके, नाउ ट्राई टू गिव द डिफरेंट शेप्स ऑफ लाइक C and D diagram and E diagram. Okay, firstly means we have to make a ball, then as shown in the diagram C. Afterwards we have to make a cylinder just like the diagram D, and at last we have to give the shape of ring kind of shape we have to give, just like the E diagram. Okay, so we have to make this kind of diagrams of all soils. Now tell me, if means firstly we had taken the three kinds of soil: clay, loamy and sandy. So for which soil it is very easy to give these kinds of shapes? कौन से soil के लिए easy रहेगा ये shape देना, cylinder, ring and ball? For the clay soil. Why clay soil? Because yesterday we have studied that clay soil have the capacity to absorb the water. Okay, so we can give the different shapes for the clay soil. It's very easy to give the shape of clay soil. Okay, as compared to sandy and loamy. Understood? Now our next topic is properties of soil. Okay, in that we will study the in details properties of all the soils. Okay, the first subtopic is that percolation rate of water in the soil. We have to calculate a percolate rate. Percolate rate कैसे calculate किया जाता है? For this here small activities given. For what we have to do, we have to make the 50 by 50 centimeter square. Two squares we have to make. One square we have to make on the floor of our house. जो हमारा पक्का कहते हैं ना, पक्का फ्लोर होता है उसमें बनाना है. एंड अनदर स्क्वायर वी हैव टू मेक ऑन द अनपेव्ड मीन्स कच्चा रोड. ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक द टू स्क्वायर्स, मतलब दो स्क्वायर टाइप बनाने हैं 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर के, 15 by 50 सेंटीमीटर के. एंड मीन्स द डिफरेंस इज दैट वन स्क्वायर इज ऑन वी हैव टू मेक ऑन द पक्का रोड एंड अनदर वी हैव टू मेक ऑन अनपेव्ड रोड, कच्चा रोड. ओके, afterwards we have to fill the same quantity of water in both the squares. Okay, then what we have to observe, we have to observe that water on the floor, how much water on the floor that flowed down. Okay, means both the roads we have to observe its observations. So what you will observe on the kacha road means the water will absorb more, but इफ़ यू विल ऑब्जर्व ऑन दैट फ्लोर, अगर आप फ्लोर पे देखोगे तो वाटर क्या नहीं होगा, इट विल नॉट एब्जॉर्ब प्रॉपरली. जो पक्का रोड होता है उसमें पानी सोख नहीं लेगा, मतलब पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा. बट जो कच्चा रोड था उसमें क्या हो पाया, वाटर क्या हो गया, ऑल द वाटर वॉज एब्जॉर्ब प्रॉपरली. ओके, अंडरस्टूड?
Here again the activity 9.4 is given. This is also the same kind of activity. Here also we have to find a percolation rate of the water. Okay, and for this activity what we need? We need a firstly we have to need one pipe. Means we can take PVC pipe, or instead of that we can take a small tin can also. Okay, जो भी अवेलेबल होगा हम वो चीज़ ले लेंगे. टिन कैन ले सकते हैं या फिर PVC पाइप भी. ओके, सपोज इफ यू आर टेकिंग द PVC पाइप, इट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर डायमीटर होना चाहिए. कितने सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर. एंड हाउ मच लॉन्ग? इट शुड बी लॉन्ग अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, उस जो PVC पाइप है जिसको हमने काटा है 5 सेंटीमीटर डायमीटर को और 20 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ को, वी हैव टू डीप कीप दिस इनसाइड द सॉइल. मतलब हमें क्या करना है उसको, वी हैव टू प्लेस दैट पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड. 2 सेंटीमीटर लगभग हमें उस ग्राउंड के अंदर प्लेस करना है. ओके, आफ्टरवर्ड्स वी हैव टू पोर वाटर इन दैट. हाउ मच वाटर? फिक्स क्वांटिटी लाइक 200 ml वाटर. ओके, एंड हमें पूरा वो वाटर को मतलब वाटर को एम्प्टी करना है. देन यू हैव टू स्टार्ट द यू हैव टू ऑब्जर्व द टाइम. ओके, पोरिंग टाइम स्टार्ट करना है. और आफ्टरवर्ड्स मीन्स व्हेन ऑल द वाटर हैज़ परकोलेटेड, जब पूरा परकोलेट हो जाएगा एंड दिस पाइप विल बी एम्प्टी, सो दैट टाइम यू हैव टू अगेन ऑब्जर्व. अंडरस्टूड? सो क्या मिलेगा आपको इसमें? ऑब्जर्वेशन मिलेगा. ओके, सो कैलकुलेट द रेट ऑफ द परकोलेशन. इट शुड बी you will get the percolation rate. So there is one formula for the percolation rate. The rate of percolation, it should be in minute ml by per minute. Okay, so what was your amount of water, वो पहले लिखना है ऊपर, and divided by the percolation time. So firstly tell me student, how much water we have taken? We have taken 200 ml water. हमने कितना पानी लिया था? 200 लिया था. Okay, and our percolation rate क्या था? सपोज यह परकोलेशन रेट वॉज 20 मिनट्स. आपका 20 मिनट्स में वो उतना 200 ml वाटर परकोलेट हुआ, चला गया. सो 200 divided by 20. So it should be, what will be the answer? Answer will be 10. So 10 ml per minute means per minute आपका कितना वाटर परकोलेट हुआ? 10 ml percolate हुआ. Understood? So that is why means sorry. So this is way you have to find the rate of percolation by the formula amount of water divided by the percolation time. ओके, जितना अमाउंट वाटर आपने परकोलेट किया उतना और कितने टाइम में किया. सो दैट विल बी योर percolation rate in ml per minute. Understood? So 10 ml per minute is your percolation rate. I hope you have understood this activity 9.4. Okay, here we have to find percolation rate of the soil. Understood? Now next class we will continue our next topic, new topic. Okay, thank you.